Hello everyone. Now in this session we'll be discussing about the second week of board exam preparation in terms of biology. As we have already discussed the first week may I gave you as assignment in terms of second unit, that was the genetics and evolution. But now in coming week, like from 31st of May to Monday to Friday, you all have to prepare the unit 1. See, when we are doing the unit wise preparation, day to day target and chapter wise preparation, आपकी बहुत सिस्टमैटिक बोर्ड की तैयारी हो रही है. आप बाकी सब्जेक्ट पे भी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन या कंसंट्रेट कर पा रहे हो, आई होप, सो दैट हम हमारा जो डे है वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल असाइनमेंट्स so that you can all do very well with this chapter. Now for this week, I mean to say that Monday, which is tomorrow, 31st of May to 4th of June, like Friday 4th of June, आपको 2 chapters को read करना है. Then Saturday you can just revise the thing and Sunday you can solve the board question banks के questions. By solving these questions, your preparations with these chapters are completely fine. Monday to Friday अगर आप वो chapters को learn करोगे and Saturday revision करके Sunday अगर test solve करोगे दो chapters का, जैसे मैं assignment दे रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो नाउ द इट्स आवर सेकेंड वीक ऑब्वियसली. सो हम लोग पहला यूनिट चूज कर रहे हैं और पहले यूनिट के चैप्टर्स को ज़्यादा मार्क्स भी वहाँ दिया हुआ है. फॉर द इट्स अ सेकेंड वीक एंड सेकेंड वीक में हम लोग पढ़ेंगे अभी रिप्रोडक्शन विच इज़ यूनिट 1. उसमें 2 चैप्टर्स आपको कंसिडर करने हैं, रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल्स. Okay, so I hope you all will follow this kind of assignments so that आप assignments week to week follow करिए and ultimately at the end of these weeks आपका पूरा preparation हो जाएगा. Okay, so for this week unit 1, remember this thing and start your preparation. Okay, if you want me to make a model paper for your this preparation or revision or practice purpose, you can just let me know and see you in next session. Thank you.